everyone, and welcome to this session. I hope you are well, and some very important, interesting things I must share. So first of all, the first thing you need to know, जैसा कि मैंने आपको बताया, this is not a normal session. Very exciting it is because there is reason to be excited. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, और ऐसी चीज है कि आप गेस नहीं कर पाओगे. Even whatever you see in my surroundings, you will not be able to guess what I am about to give today, what the gift is, what the price is. जो प्राइस है वो मैं आपको I'll tell you after the conversation is over, because कुछ बहुत important चीजें हैं. Not only will I tell you what the price is, I will tell you why I'm doing this. Why is there a gift? Why is this special, etc. I'll tell you. First of all, सबसे पहले काम की बात करते हैं. Important चीज, let us get that over with, then we'll have fun. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इसीलिए है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. प्रियंका, सिमरन, एवरीबडी, यावत, बंदिता, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज in the UPSC exam we have a massive challenge of accumulating knowledge. हमको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज को अक्वायर करने की जरूरत है. इट्स नॉट इजी टू डू. हाउ डू यू डू दिस? हाउ डू यू acquire all the knowledge that is required? और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात ये भी कि देर इज नो वे यू कैन कंप्लीट दिस सिलेबस. आप सिलेबस कंप्लीट कर नहीं सकते कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट. दिस इज नॉट लाइक अदर एग्जाम्स. हम कभी भी ये नहीं समझ पाते और बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं. वी रिमेन इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज वी नेवर नो इफ वी आर डूइंग गुड इनफ. सो इफ यू से दैट you are reading history, how do you know that you are doing enough? When do you know that you don't need to do it further? How do you know you are actually the quality of your preparation is getting somewhere? वो डेटा कहां से आएगी हमारे पास? वो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमको? वो फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या है? ये सब क्वेश्चंस को देखते देखते आई हैड डिजाइन्ड अ पेडागोजी, बट देयर आर सम प्रिंसिपल्स व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू. बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं. And somebody from Rashmi is from psychology. These are things which have been tried, tested, culled out from the research of psychology, neuroscience. Psychology, neuroscience, and the whole ambit of these disciplines is called cognitive science. ये cognitive science के disciplines हैं. Feedback number one, insight number one. This is something you can actually note down. ये valuable, important चीजें हैं. सबसे important बात, information processing. Information processing का मतलब हम किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे से समझ पाते हैं जितने अच्छे से हम उसको प्रोसेस करते हैं. डीप प्रोसेसिंग. आपको पता है डीप प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रथमेश, शहरी, शाही, व्हाट इज डीप प्रोसेसिंग? डीप प्रोसेसिंग का मतलब आपने अगर कुछ पढ़ा, इफ यू एंगेज विद द कंटेंट, देन यू रियली रिलेटेड टू इट. आपने अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाई, आपने खुद की लाइफ के इंस्टेंसेस से उसको कनेक्ट करा और आपने बहुत डीप एसोसिएशन बनाया. आपने ऊपर ऊपर से सिर्फ रट्टा लगाने के लिए काम नहीं किया. यू वेंट इनटू इट एंड यू वर लाइक इंक्लाइंड इन इंटरेस्टेड, like you are inclined and interested in something that you are actually interested in reading. नॉवल, जब किसी बुक पढ़ते पढ़ते या कॉमिक पढ़ते पढ़ते एक हुक बन जाता है, देयर इज अ हुक, एंड वंस द हुक इज देयर यू कांट स्टॉप इट. देन यू स्टार्ट एंगेजिंग विद द कंटेंट effortlessly. That is called information processing. Information processing theory says the deeper the information you process, the better it is. उतनी देर वो याद रह पाएगा, उतना आपको इफेक्ट पड़ेगा, उतनी पावर है उस कंटेंट में. हम चाहते हैं यूपीएससी के लिए जब हम पढ़े या इस टाइप के इस लेवल के एग्जाम के लिए पढ़े, हमारी डीप प्रोसेसिंग हो. हमको कंटेंट भी चाहिए, हमको मेमोरी भी चाहिए उसके, हमको फैक्ट्स भी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए. वी नेवर नो क्या पूछेगा. यस सौरभ, क्रिटिकल एनालिसिस इज वन थिंग, बट कभी कभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी तो पूछते हैं. So we need the details, but we also need the content and the depth and that ability to understand their interconnections. ये conceptual clarity बोलते हैं इसको. This is one. This is level of processing. I am going to show you ये कैसे use करी गई है in the pedagogy which I will relieve. Yes, some of the people know very good, but today I'll go to share some new things as well. Second, हमारी जो थिंकिंग होती है, ह्यूमंस की थिंकिंग मोस्टली विजुअल होती है. हम विजुअल क्रीचर्स हैं. हमारे ब्रेन का बहुत सारा पोर्शन विजुअल कॉर्टेक्स ने ले रखा है. आवर लर्निंग इज विजुअल. यू नो व्हाट आई मीन? When we read something, even when you read text,
It is essentially your brain is turning those texts into meanings and then it is creating images in your brain. Those images are how we learn. Those stories are how we remember things. We see thoughts. We see the content that we are reading when we are processing it properly, right? And this, ladies and gentlemen, this visual learning is important. My point here is visual learning की जो impact होती है हम पे वो textual learning से ज्यादा होती है. Visual learning has more of an impact on us than textual learning, and I suggest in my pedagogy something very important with respect to this. And we'll use this. You'll see, I'll show you how to do that. Another important insight, हमारी memory context dependent होती है. Context dependent. अब इसकी details में जाने की जरूरत नहीं हमको आज, but ये जान लेना जरूरी है. It is important to understand कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते. कॉन्सेप्ट्स हमेशा इंटरट्वाइंड होते हैं. कॉन्सेप्ट्स के फ्रेमवर्क्स होते हैं. जब हम फ्रेमवर्क समझ लेते हैं तो बाकी सब चीजें आसान हो जाती हैं. दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्रिटिकल इनसाइट इज वी नीड स्पेस्ड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेंटल एंगेजमेंट जो है स्पेस करनी है हमको. लास्ट इनसाइट सिर्फ स्पेस नहीं करनी है. वी नीड रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म्स. अगर आप एक अच्छा लर्नर बनना चाहते हो, सपोज यू वांट टू compete in the Olympics of learning. Suppose my challenge is to say to you, you are to compete in the Olympics of learning, which is exactly what you are doing, by the way, in the UPSC exam. In the Olympics of learning, you have to optimize your performance. You need to do spaced practice when you learn, and you need context. And the richer your frameworks are, the more information you can hold in your head. It's as simple as that. And you need feedback mechanisms telling you how you're doing. These are the essentials. ये जितने भी essentials हैं, all these essentials have now been included in the Hexa task method. This is a method. It is a very scientific pedagogy. Hexa task means it is a pedagogy I had designed, and I'm going to show you about something about this. It's very interesting. And again, some new things I'm going to talk about, which I have never spoken about because I know some people know about this. The Hexa task method is a series of 6 steps. Hexa matlab 6, task matlab task. This is a scientific pedagogy where I used all these insights of neuroscience, and I'll show you each of them. B12QRT. These are the 6 steps you have to do before you say that you have completed a subject. अब लोग मुझे बोलते हैं, when people ask me, students ask me, मैंने सर सारे सब्जेक्ट्स एक बार ही कर लिए. मैंने सारे सब्जेक्ट्स एक बार ही कर लिए. My immediate question is, exactly what do you mean that you have done that subject? Exactly how do you define that done? That doing, वो हो जाना, वो कर लेना, what exactly would you mean by that? And there is a very precise layer, ladies and gentlemen, and I'll show you what that layer is. See, this is the Hexatask method. This is the Hexatask method. This is how it progresses. We first do big picture formation for a subject. I'll tell you what big picture formation is. We then move on to second reading stage. First reading stage, we then move on to second reading stage. Then we analyze previous year questions, revision and testing. When we do all of these, then we can say that it is done. Abhi, I'm going to show you what they are. But filhal, just know that we have to go through this sequence. Big picture formation. I just mentioned, आपने सुना, and I think you would agree that visual learning important है. इसमें कोई doubt नहीं है. Visual learning जब हो जाती है तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ. Let me give you an example. Have you seen this show? This is a popular show on Netflix. Netflix पे है, YouTube पे है, बहुत जगह है. Have you seen it? It is a thing of beauty. It is a wonderful series of episodes on environment, nature, wildlife, conservation, climate change, narrated by David Attenborough, and it is beautifully created. इसको देखने में कोई एफर्ट नहीं लगता है. It is just as easy as you can. It is just enjoyable, pleasure. You can actually enjoy this. This is highly enjoyable. ये देखना चाहिए सबको. अगर नहीं देखा है तो देखना जरूरी है. ये विजुअल लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज्ड, उपासना, मोनिका, आई टेल यू, देयर वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. देखो, यूपीएससी ना कभी भी आपके टेक्स्ट बुक से नहीं पूछेंगे. वो दे आर नॉट स्टूपिड. वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और सोर्सेज में से नहीं पूछते हैं ज्यादा सवाल. वो ऐसे सवाल पूछेंगे, दे विल आस्क सच क्वेश्चंस जो बस लाइफ में कभी सुने हो तो सुने हो.
जिस चीज को हम जीएस बोलते हैं, जीएस, जनरल नॉलेज, वो एक्चुअली में जनरल नॉलेज का टेस्ट बन गया है. इट इज नॉट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू दैट जनरल नॉलेज इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. जीएस पूरी लाइफ, जनरल नॉलेज हम पूरी लाइफ में इकट्ठी करते हैं, धीरे 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 धीरे. कभी कुछ सुना होता है, कभी कुछ सुना होता है, वी हेयर दीज एंड वी accumulate knowledge. The more curious you are, the more knowledge you learn, right? And this is where that starting of the pedagogy is. My point is, big picture formation is visual learning. This is the stage which you do before you entertain the textbook. मेरी सजेशन ये है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक इन्वॉल्व नहीं है. हर सब्जेक्ट की बिग पिक्चर फॉर्मेशन पहले विजुअली कर लेनी चाहिए, पहले विजुअली कर लेनी चाहिए, ताकि उसका एक नैरेटिव दिमाग में बैठ जाए. Once I see this series, once I see this documentary, and after that I read a complicated book on economics or on environment. और आप श्री राम की बुक पढ़ते हो, आप बेशक और बहुत सारी बुक्स पढ़ते होगे और कंटेंट आपके पास आता होगा करंट अफेयर मैगजीन्स में और हर जगह से. नाउ यू विल हैव विजुअल एड्स, यू विल बी एबल टू रिमेंबर. आपने एक बारी इसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट अगर देख लिए, मैनग्रोव फॉरेस्ट, आप कभी नहीं भूलोगे उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इकोलॉजी के लिए. पढ़ना एक चीज होती है, देख लेना एक अलग चीज होती है. जहां तक हो सके नॉलेज और फ्रेमवर्क्स देख लेने चाहिए. दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द पेडागोजी. वंस यू डू दिस, you move on to the next stage. I will tell you, Babita, how you do big picture formation. I have created big picture formation playlists. I had created playlists on YouTube. और उन playlists में I have not added coaching institutes का content. I have added content from people like National Geographic, all these authentic sources, which have nothing to do with the UPSC. बिल्कुल जो genuine, आपने शायद कुछ challenges करे भी हों big picture formation के, you know. This is what I'm suggesting. I have created these playlists for all the subjects. और वो मैं I had picked those videos myself. I handpicked them, and there are those playlists. Now I've given you a clue about what's going to happen next. But let us see. Let us see. Moving on to the next stage. First reading stage. ये जब विजुअल लर्निंग एक बारी हो गई, विजुअल लर्निंग होने के बाद हम फर्स्ट रीडिंग स्टेज पे जाते हैं. After visual learning, in the big picture formation, we move on to the first reading stage. This is where we engage with the text. This is where the textbook now comes into the picture. And this is where you begin your note making. Shalini, Nadeem, understand what I'm saying? This is where note making begins. But how does it begin? How exactly does it begin? This is what you do. This is a snapshot from my own book. I was reading this book, and you see, in first reading, all I want you to do, मैं सिर्फ इतना आपसे बोल रहा हूं कि just note, don't even write words. Light highlighting, लाइट हाईलाइटिंग. जहां पर आपको लगे कि ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपको लगे ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, लाइट हाईलाइटिंग. लाइट सिंबॉलिक मार्किंग. सिंबॉलिक मार्किंग ये कि आपको ऐसा एक सिंबल वहां पे आप डाल दीजिए, जिससे आप जब उसको फिर से देखें उस टेक्स्ट को, तो आपको पता हो कि अच्छा यहाँ पर या शायद कुछ इंपॉर्टेंट है या यहाँ पर कुछ है. आपकी मर्जी, आप क्या सिंबल डालना चाहते हैं. यू कैन बी क्रिएटिव विद इट. बट फर्स्ट रीडिंग में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. In the first reading, we do not expect to memorize it. We are not trying to memorize it. We are going through the text, starting to engage with the text, started to create a map in the text. We will revisit the text again in later stages, but in this stage, this is all we want to do. You lay a path for yourself because you know you will have to revisit it. ठीक है? This is first reading stage. First reading में note making इसी level पे करनी है. Memorize नहीं करना है और उम्मीद भी नहीं करनी कि मेमोराइज हो जाएगा. Expectations should be kept low in first reading. Do not expect to memorize or remember everything. Just enough, so that you revisit the text again. Your life is not as hard. You should not have to read the whole textbook again. बस इतना करना है अपने लिए. Now comes the second reading stage. What happens here? In the second reading stage, we go into the details of the text. We read the text more carefully. But that is not all. We do something more. Take a look and see if you can see. Can you see that I have created certain flowcharts, certain small diagrams around this page? Can you see those? What have I done?
This is why, what type of note making is this? What I have done is इस पेज पे जो भी इंग्लिश लिखी है मुझे वो इंग्लिश फिर से नहीं पढ़नी. अगर मुझे वो इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ गई, then what is the point? Hey, I want to make my life easier, right? This, I want to use the pedagogy, I want to use the science to become more efficient. So why would I read the whole text again? My notes will be such markings, will be such diagrams that tell me the whole thing in a snapshot. I don't want to read this whole English page again. I just want to know कि इसके में क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये राइटर. मुझे एक नजर में दिख जाना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है इतनी सी जगह पे. दैट इज माय समरी भी नहीं बोलेंगे जोशुआ, समरी से कुछ ज्यादा है. इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल थिंग इन अ कंडेंस्ड फॉर्म. आई एम नॉट सेइंग यू राइट इंग्लिश पैराग्राफ. Mind maps, you can say mind maps, flowcharts, whatever. I want you to condense the entire English into diagrams. I want you to reduce the surface area. अगर इस पेज का सरफेस एरिया इतना है, मैं चाहता हूं कि आपका सरफेस एरिया इतना हो बस रिवीजन के लिए. ये है सेकंड रीडिंग स्टेज. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग स्टेजेस हैं. इनका मतलब ये नहीं है कि एक ही बारी पढ़नी है. दिस इज एन एग्जाम्पल. दिस इज हाउ द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच वर्क्स. ऐसे डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच वर्क करती है. आपने बिग पिक्चर फॉर्मेशन करी, फिर आपने फर्स्ट रीडिंग करी, उसके बाद दूसरी बारी में आप और डिटेल में गए, धीरे धीरे इमारत खड़ी होती है. Slowly your processing increases because you are going deeper and deeper. You already did the visual learning. आपने विजुअल लर्निंग कर ली बिग पिक्चर फॉर्मेशन में. आपको नैरेटिव और कॉन्सेप्ट पता है. आपने अपनी क्यूरियोसिटी के एंगेज कर लिया. यू एंगेज योर क्यूरियोसिटी, right? You watched documentaries. You took it sequentially, and slowly the knowledge network that you need will get built. इसको बनाना पड़ेगा. It is like growing a plant. इट इज लाइक ग्रोइंग अ प्लांट. उसमें टाइम और पेशेंस लगता है, एक दिन का काम नहीं है. बट आपको ये स्टेजेस पता होने चाहिए. नाउ नोट मेकिंग आफ्टर सेकेंड रीडिंग में आपके जो नोट्स तैयार होते हैं ऐसे होने चाहिए कि एक झलक में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए. मैं चाहता हूं सरफेस एरिया कम हो. एक झलक में जितने से ज्यादा वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई कैन कैप्चर इन वन ग्लांस, आई वॉन्ट टू डू दैट. What I don't want, what I don't want is I should not have to revisit the text. मुझे टेक्स्ट को रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पूरा स्टार्टिंग से. अगर वो मैंने करा, then I have wasted my time and I have not created intelligent notes. Those notes are not intelligent notes, right? This is second reading. This is how you progress. अब in my pedagogy, they are all different stages, and each stage is marked with a challenge. And the you go deeper and deeper, it gets more difficult and so on. Now ladies and gentlemen, this very important aspect now, testing. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूनम, हिमांशु, प्रियंका, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फीडबैक मैकेनिज्म्स आर इंपॉर्टेंट. वी नीड फीडबैक मैकेनिज्म्स in the journey to tell us where we are going, right? And we need to be able to use those feedback mechanisms. Now I'm going to give you a rule. I'm going to give you a very important fundamental rule. Please write that down. It's going to help you a lot. A very important rule indeed. The rule is called the 65% rule. The rule is called the 65% rule. The 65% rule says after you do first reading stage, before going forward, you should be able to score more than 65% marks in an easy test. After going to second reading stage, you should be able to score 65% marks in a hard test. ये 65% रूल है. 65% रूल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन ये है. The simplified version of the 65% rule says that before calling quits to a subject, before you say that this subject is done, you should be able to score 65% or above in a hard test. That is what that rule means. This is what the rule means. Agar, if you have a question, in your mind about this issue, about whether you have done the subject or not, this is the test you use.
This is the test you apply. This is a feedback mechanism you should use yourself. आपके पास दुनिया भर के टेस्ट का एक्सेस है, दुनिया भर के टेस्ट सीरीज हैं, हर जगह मिल जाते हैं आपके पास। वो होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनको यूज कैसे करा जाएगा? दे आर टू बी यूज एज डायग्नोस्टिक टूल्स। अगर 65% से ऊपर आ रहे हैं तो आगे बढ़ा जाए। 65% से ऊपर आने का मतलब ये भी नहीं है कि एग्जाम हो जाएगा क्लियर। 65% से ऊपर जाने का मतलब ये है कि नाउ वी कैन लीव दिस। इसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हो गई, अब बाकी सब्जेक्ट्स को इसके लेवल पे लेकर आना है। This 65% rule means that it tells you if you hit that mark, you have invested enough in that subject, and now you should bring the other subjects to that level before going further into one subject. That is what it means. That's how you use it. This is the idea of it, right? We are not using testing as judgmental tools, as tools of judgment. हम टेस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि ताकि हमको पता चले कि हमारा यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा। हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि ठीक पॉइंट्स पे हमको पता चले कि हम कैसा जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, रुकना है कि आगे बढ़ना है, ये बताता है बस। दिस इज व्हाट इट डज। रिवीजन के बारे में आई हैव टोल्ड यू अ थिंग और टू एंड आई विल नॉट रिपीट। व्हेन यू से रिवीजन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडेंसेशन ऑफ ऑल द कंटेंट। कोई एक जगह पे ऐसा होना चाहिए कि आपके पास सब हो। अबाउट दिस टेस्टिंग दो वन थिंग आई शुड टेल यू। How do you test? Somebody asked, how do you test? I had created hexagem tests. I had created hexagem tests for each subject. I had created these tests to diagnose exactly this. अगर उन टेस्ट में 65% और अबव है तो फिर एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट में हो गई है। अगर नहीं है तो नहीं हुई है, फिर से कंटेंट को रिविजिट करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दोस टेस्ट्स। दोस टेस्ट्स आर पार्ट ऑफ द सरप्राइज, जस्ट वेट, दैट इज कमिंग। So this, ladies and gentlemen, is the Hexatask method. Now we come to the fun part. I've told you the pedagogy, I've told you the sequence. हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि ये फॉलो करें, बट अभी तक किसी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिली है। इट हैज नॉट, वी डोंट यूजुअली फाइंड इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट की भी करना तो ये सबको पता है कि यही करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करना है, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली एम आई सपोज टू डू। So I've tried to make it more clear. Now, ladies and gentlemen, let me show you something. But first, I am about to reveal your gift. I'm about to reveal your gift, and I'll tell you what you need to do in order to get that gift. First, let me tell you about this thing. This is the ultimate UPSC navigator. This is the UPSC navigator which I had created for my students about 2 years ago. For 2 years ago, I had created this tool for my students. Now, this is an interesting tool, ladies and gentlemen. I'm going to show you a few things here. I'll tell you how it works fundamentally, although you will not be able to tell very much because it's at a distance. You see this, prelims. Prelims is pointing towards two hexagons. This is CSAT, this is GS. This is CSAT, this is GS. This is GS1, this is your GS2, GS3, essay, ethics. And at the bottom is this table. This is the strategizer. It's an important word. ये word बहुत important हो जाने वाला है अभी. Strategizer. This is where you can track your whole preparation. In hexagons के अंदर सारा का सारा syllabus लिखा हुआ है. The syllabus of all the subjects is written inside these hexagons. But important, more important, can you see these QR codes? In hexagons के बीच में QR codes हैं. In hexagons के बीच में QR codes हैं. If you scan those QR codes, they will take you to the content of that test, of that particular subject. उस सब्जेक्ट के कंटेंट पे ले जाएगा आपको। इसके क्यूआर कोड्स चेंज होते रहते हैं। आई कीप एडिंग कंटेंट, कभी कभार चेंज करना होता है, कभी कभार अपडेट करना होता है, वो होता रहता है बैक एंड पे, बट दीज आर द क्यूआर कोड्स। हाउएवर, देयर इज वन थिंग, हैव यू नोटिस्ड द कलर कोडिंग? कैन यू सी द कलर कोडिंग हियर? कलर कोडिंग, this color coding, ladies and gentlemen, is the interesting part. It is the gamification part. It is the gamification part. If you see at the bottom, बिल्कुल बॉटम पे देखिए इस चार्ट के, आप बॉटम पे देखेंगे कि कलरफुल जेमस्टोन्स हैं, कलरफुल जेमस्टोन्स हैं। अब कलरफुल जेमस्टोन्स, द कलर कोरेस्पॉन्ड्स टू अ सब्जेक्ट. एवरी कलर इज अ सब्जेक्ट. द येलो इज इकोनॉमी, द रेड is science tech,
द ब्लू इज हिस्ट्री, द ग्रीन इज ज्योग्राफी, ऐसे ये सब कलर्स हैं। आइडिया ये है, द आइडिया इज आपको सारे के सारे जेमस्टोन्स कलेक्ट करने हैं। दैट वाज द आइडिया। यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज हेक्सा जेम्स। अगर आपने सारे जेमस्टोन्स कलेक्ट कर लिए तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। Supposedly, that is the idea behind this chart. It is a gamified chart. It's a game. You just collect all these gems. But how do you collect it? How do you collect a gem? How do you collect a gem is exactly through this hexa task method. That there is a table at the bottom. आप जैसे जैसे हर सब्जेक्ट का ये करते जाते हो, आप टेस्ट देते हो, आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो, आप वो हेक्साजेम क्लेम कर सकते हो। आपको सारे हेक्साजेम्स क्लेम करने हैं। दैट इज द आइडिया। नाउ ladies and gentlemen, are you ready to be told what the free gift is? No, actually, this navigator is no longer available, and now it is only the only few copies of it are reserved for students of my batch in Nirnay IS. But it used to be one of the first tools I created. But now, are you ready to bow for your free gift? Your free gift, ladies and gentlemen. Get ready for it. Get ready for it. Here it comes. Your free gift. If you do my assignment, if you do my assignment, your free gift will be, I will give you a high resolution PDF. इसकी high resolution PDF कभी share नहीं करी है मैंने. My publisher had forbidden it. इसकी high resolution PDF कभी share नहीं करी गई है. I will be giving you the high resolution PDF and all the subject wise master plans and all the big picture formation playlists. Big picture formation playlists, subject wise master plans, navigator PDF high resolution. I will be giving to anybody who will meet my challenge. I will share with you this link to the drive, and अगर आपने असाइनमेंट कर दिया तो, अगर आपने इस असाइनमेंट करा सिर्फ तब, और उसमें आपको ये सब रिसोर्सेज मिलेंगे। इन पीडीएफ के अंदर बिग पिक्चर फॉर्मेशन प्लेलिस्ट है और पूरा रोड मैप है, पूरा रोड मैप है प्रिपरेशन कैसे करनी है। What is the challenge? The challenge is something I have already sent to your inbox. At 7:30 today, I have sent an email which has a challenge. That challenge has a test. It's a very basic test. It's not a subject-oriented test. बहुत simple सा challenge है. कोई ज़्यादा difficulty नहीं होगी आपको और आप कर लोगे उसको. It will consume half an hour maybe, and you will be able to do it. But that is the whole idea behind it, right? If you can do this, if you can do this, and if you can just reply to me, then I will send you those free gifts. Now, why am I doing this? Why? मैंने आपको अभी न्यूरोसाइंस की बताई. I told you the neuroscience impact on pedagogy, and I use it a lot. This itself is one of those examples. न्यूरोसाइंस की रिसर्च, साइकोलॉजी की रिसर्च बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करती है कि गेमिफिकेशन जरूरी है. गेमिफिकेशन जितनी कर दोगे आप उतना इजी हो जाएगा प्रोसेस. ये गेमिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है. ये चार्ट एक गेमिफिकेशन का एग्जाम्पल है. ये स्पेशल असाइनमेंट उसी चीज का एग्जाम्पल है, राइट? दिस इज द चैलेंज. द चैलेंज हैज बीन सेंट टू योर ईमेल. आपको ईमेल में चैलेंज भेज दिया गया है. आपके पास डेडलाइन है, आपके पास डिटेल्स हैं और आपके पास अब सारी इंफॉर्मेशन है. मेरा लिंक गूगल ड्राइव का तैयार है. Anyone who does the challenge will receive this link from me. Last important, interesting thing, very important, very interesting, very super important. My next session will have something even bigger. I will be giving a much bigger, much more valuable gift in the next session challenge. But for now, this is your challenge. This is the prize. You are now on your own. The ball is in your court. Thank you very much. All the best. And I will see you.